Hello students, in our previous video we have seen what is syllable, how to count syllables and syllable divisions. Now in this video we will see about syllable structure. See here I have written some examples and we have to write the syllable structure. In your 12th board examination there will be 1 mark question related to this topic. Okay. Now let's see how to write the syllable structure. For writing syllable structure, you must have to know consonant and vowels. Rather, vowel sounds you must have to know. Okay. And for consonant, we will denote C, and for vowels, we will denote V. Okay. C and V we have to denote. Okay. Now C. Develop. Okay. Either first you can write the syllable division like de, ve, la. Okay, this is the syllable division, and then you can write its syllable structure. Like for this D we will write C, then for this E we will write V, then for V we will write C, again for this E we will write V, then L we will write C, O will write V, and P we will write C. This CV, 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 C is the syllable structure of develop. Okay? बस इतना आपको याद रखना है, जिसका भी जो भी साउंड हम प्रोनाउंसिएट करते हैं उस साउंड के लिए हमें C या V का यूज अकॉर्डिंग टू, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो C, वॉवेल होगा तो V, बट जहां हम प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं हो रहा है वहां हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं होती. जैसे अब यहां देखो सडन, इसका सिलेबल डिवीजन कैसा होगा? सड डन, ये इसका सिलेबल डिवीजन होगा. ठीक, अब इसका सिलेबल स्ट्रक्चर कैसा होगा? एस के लिए हम लेंगे सी, यू के लिए लेंगे हम वी, लेकिन अब ये डी और ये डी के लिए हम अलग अलग सी सी ऐसा नहीं लेंगे, बिकॉज जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं सडन तो हम ड को 2 टाइम्स प्रोनाउंसिएट नहीं करते, सिंगल टाइम प्रोनाउंसिएट करते, इसलिए हम लेंगे सी, देन वी, एंड देन हियर अगेन a rule here again. If there will be N, M and L at the end of the word, then it will work as a vowel. Okay, here E is silent and that's why E and N we have taken here V. Okay, अगर लास्ट में N, M या L आता है तो हम उसे एज अ वॉवेल कंसिडर करते हैं. ओके, तो ये रूल आपको नोट डाउन करके रख लो, या याद रखना है. ठीक, नाउ सी collection. Now let's see the word collection. We will directly write the syllable structure. Okay, K, C for C, O, V, L. Even if there is a double L, but still we will take here only C for this double L because we pronounce it L. Okay, then E, V, then सी दिस CTION, शन, क, श और न का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो कि तीनों कॉन्सोनेंट है, और इसीलिए इसका C ये हम लिखेंगे CTION, C और C. ओके, यहाँ आप कहोगे कि अभी आपने मैम रूल बताया था कि जब लास्ट में N होता है तो उसे हम वॉवेल कंसिडर करते हैं, बट हियर वी विल नॉट कंसिडर इट बिकॉज इट्स TION. ठीक है, अगेन इट्स द exception. Now see degree. Okay, degree, for this D will take C, then V, then again C, then again C, and this double E we pronounce it only single degree, and that's why we'll take here V. Now numbers, C, V, C, C, here E, and that's why we'll take here C, then R will take C, and this S will take C. This is the syllable structure of numbers. Now the next is strength. Okay, strengths. Take C. C is for this S. Then TR, tr. We take C for this T and R. Okay. Then V. Then
Now this N is not the vowel here, so we will take C. This G is silent and that's why we will not take anything for this G. And th, for this th we will take C because TH makes th, not CC. Okay, then for this S we will take again C. This is the syllable structure of strength. Okay, now see the next phonetics. Okay, F, here PH, the pronunciation of PH is P, not the separate P and H. That's why we'll take here C for this PH. Then V, then again C, then V, then C, then for this I will take V. C and S are we are pronunciating C and S separately, X, X, and that's why for this C will take C and for this S again will take C, and this is the syllable structure of phonetics. Now for this quality, okay, see the pronunciation qua, K and V both are here in this Q, and that's why we will take C, C for this Q. Then for this U will take V, U and A for both we have to take only V. Then for L will take C, then for I will take V, then again for this T will take C, and this Y is acting as a vowel and that's why we'll take here V. This is the syllable structure of quality. Okay, the next word tomato. Okay, for this T you will take C, O will take V, M, C, V, for this T again C and again V. Now in this book we'll take C for this B, then here double O we are pronouncing singly book, that's why we'll take only V for this double O and again C. Sorry. Okay, CVC. See here I have taken some more example. Humble. For this humble we'll take C, V, C, V, C. But this E is silent here and that's why we will not anything for this E here. Okay. Now अब आपको मैंने बता दिया जब E साइलेंट है तब उसके लिए V हमें नहीं लेना है. फिर आप कहोगे ही में कैसे होगा, तो ही में हम C और V लेंगे क्योंकि हम E को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है. अब हमने आपको बताया था कि लास्ट में अगर वर्ड में M, N या L आता है तो उसे हम वोवेल कंसिडर करते हैं. उसका ये एक एक्सेप्शन है कि इसे हम V और C, इसका सिलेबल स्ट्रक्चर हम VC लिखते हैं. और एयर, ये तो खास है, I और एयर बोथ इन लोगों का सिलेबल स्ट्रक्चर, इन दोनों का सिलेबल स्ट्रक्चर होता है V. I तो ओके है बट एयर R इज साइलेंट एंड दिस A and I both are having only one sound. Okay, only one vowel sound and that's why here we have taken this V and this V. So ये exceptions आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है. अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछे जा चुके हैं. ओके.